हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता एज इट इज के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 3। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम नपुंसकता, मास्मगमः मत प्राप्त हो, पार्थ हे पृथा पुत्र, न एतत् कभी नहीं यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ परंतप खड़ा हो हे शत्रुओं के दमन करने वाले। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममः सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम सांख्ये मैं युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इषुभिः तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा, पूजा अहरो पूजनीय, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भयक्षमपीह लोके, हत्वात् कामास्तु गुरूनिहेव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भयक्षमपीह लोके, हत्वात् कामास्तु गुरूनिहेव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् गुरुजनों को, अहत्वा न मारकर, ही निश्चय ही, महानुभावान महापुरुषों को, श्रेय अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्षम भीख मांगकर, अपि इह भी इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की, कामान
इच्छा से तू लेकिन गुरुजनों को इह एव इस संसार में निश्चय ही भुंजीय भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो वो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। In the first chapter of Bhagavad Gita, we have seen the military arrangement of both the Pandavas and the Kauravas in the war of Kurukshetra. Duryodhan was quite confident of his success as Bhishma Pitamaha, Guru Dronacharya, Kripacharya, Karna, Jayadratha, Ashwathama, his 99 brothers and many other warriors were all ready to lay down their lives for the sake of his selfish desires. On the other hand, Arjun was the best archer and he was fighting to support Yudhishthir Maharaj, his elder brother. And Sri Krishna himself was with Arjun as his charioteer. But just as the war was to begin, Arjun was surrounded by sorrow and had completely lost all his confidence and valor. Sri Krishna was present with Arjun always, but didn't speak a word till Arjun surrendered to Sri Krishna. In Bhagavad Gita, chapter number 2, shlok number 7, Arjun says, Shishyaste aham sadhimam tvam prapannam, which means, my dear Krishna, so long we were talking as friends, but now I become your disciple. Kindly save me by your instructions. Please guide me, Sri Krishna. Now the stage is all set for Sri Krishna to give the knowledge of Bhagavad Gita. The knowledge of Bhagavad Gita is this, that we are spiritual beings and not material beings. Arjun was too much attached with the bodily relationship with his own people, which made him overwhelmed with weakness and sorrow. All of us are Arjun in some or the other way. We have acquired all the material qualifications and are successful in our professional life. But at the time of any crisis, many a times we feel that we are unable to handle the situation and feel lost and depressed. This is because that we are not in conversation with Sri Krishna. Krishna is always with us in our heart as our soul. In Bhagavad Gita chapter 15, shlok number 7, Krishna says, Mamev Anshu Jeev Lok, which means all the living beings have the part and parcel of Krishna as the soul. Till the time Arjun did not surrender to Sri Krishna, Sri Krishna did not advise him. Same is the situation with each one of us. A teacher should teach only when the student want to learn. This is the role of Bhagavad Gita in our life. Arjun, being the best archer, could not fight as his mind was filled with doubts and confusions. अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा था। अर्जुन क्षत्रिय है
और उसका कर्तव्य है कि वह युद्ध करके अपनी प्रजा को अधर्मी दुर्योधन से रक्षा करे। लेकिन वह अपने मन के दुर्बलताओं के कारण अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, आपने मधु नामक असुर का वध किया है, लेकिन मेरा नाम भीष्मसूदन या द्रोणसूदन नहीं है। फिर आप मुझसे मेरे गुरुजनों का वध क्यों करवा रहे हैं? अर्जुन कहता है कि चाहे भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण दुर्योधन का साथ ही क्यों न दे रहे हों, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि वे उनके गुरुजन हैं। अर्जुन पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, लेकिन श्री कृष्ण अपने परम मित्र को कर्तव्य विमुख अर्थात अधर्म नहीं करने देंगे। जब अर्जुन की सारी भौतिक विद्या असमर्थ हो गई उसे मार्ग दिखाने में, तब श्री कृष्ण ने उसको गीता का परम ज्ञान देना प्रारंभ किया। If a doctor becomes compassionate towards his patient and doesn't operate upon him thinking that his patient will have pain, then the patient will never heal from the illness. This way, the doctor is not performing his prescribed duties. We need to follow the footsteps of Arjun and surrender to Sri Krishna and listen to Bhagavad Gita and apply its teachings in our life to become fearless and confident in performing our duties. The second chapter of Bhagavad Gita is full of Sri Krishna's guidance with which we will overcome all our doubts and gain our true self, which is that we are spirit souls and not merely a body. Human life is meant for spiritual advancement, and it is only possible with the knowledge of Bhagavad Gita, which Srila Prabhupada is explaining to us as it has been spoken by Sri Krishna, who is Bhagavan himself. Now I end the shlok here, and we shall meet again with the next shlok, and we will see how Sri Krishna, with the teachings of Bhagavad Gita, helps Arjun in overcoming all the doubts and fears of his mind. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।